Welcome back, students. We are again back with your online classes. In our previous classes, we were discussing about your chapter, which was prepositions, and I told you that we will discuss prepositions in 3 parts. What are these 3? Very good. I thought that all of you have forgotten, but no, you have already remembered. So, prepositions, we have already discussed place. Yes, we have discussed movement. And today, today we are going to discuss about your time. It is the topic of today's topic. Okay, students, before I go ahead and explain you about the preposition of time, I believe you are already clear with preposition of place and preposition of movement. Preposition of place, it tells you where someone or something is. When we talk about preposition of movement, it tells you about the movement of something or someone. Very good. The best thing which we are going to learn today, that is about the preposition of time. You can note down a small definition of this preposition of time. Again, we will start with the short form. And what is your short form? A POT, pot. A POT helps us to talk about what? What we are studying today. Yes, very important. It explains you about the time. So the preposition of time helps us to talk about time. हम जब preposition of time पढ़ रहे हैं तो obviously वो क्या define करेगा, हमें time बताएगा. अब time घड़ी का time ही सिर्फ नहीं है. It can define you easily either time on a watch, either it can explain you time during the years, or it can define you time during the daytime. Anything. You can write down some of your words as an example. What are those words which explains you the meaning of time? For example, again, in word can be used, on word can be used, at, after, before. Don't get confused, students, because these are the common words which you have used in place also and movement also. But sentence के according उनका meaning change हो जाता है. Since, for, by, till, during, or from, many more. There are many more words which can explain you about the timing. But still, the most important or the most common words which used by others, that is the in, on, at, after, before, since, for, till, during, from, these are the words, right? Okay, before I explain you can write down these words: in, on, at, after, before, since, for, by, till, during, from, many more. These are the words which can be used to explain you the time. When you are talking about a noun or a pronoun, जब हम लोग noun या pronoun के बारे में बात करते हैं और किसी word की help से आपको उनके समय के बारे में पता चलता है, you are able to find out the timing. आपको प्रॉपर टाइमिंग के बारे में किसी भी तरह का कोई आइडिया या हिंट मिलता है, इट बिकम्स योर preposition of time. Hope it is very much clear to you. Let us discuss some of the words, some of the sentences, so that we can make it more clear. For example, okay, you all are students. In your class, in your classes, after taking 3 or 4 classes, what happens? Yes, that is your break, your lunch break, or your recess. We call it recess. So if I say our recess begins, हमारी
रिसेस जो है वो शुरू होती है कितने बजे. इफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द टाइम, देन ऑल्सो आई कैन राइट डाउन दैट वर्ड. और इफ आई से कि हमारी रिसेस जो शुरू होती है वो दोपहर में स्टार्ट होती है. ऑब्वियसली मॉर्निंग ड्यूरेशन बीत जाती है आपकी 11:40 12 के आसपास होती है. सो दैट इज द टाइमिंग व्हेन वी कॉल इट एज अ दोपहर या नून, आफ्टरनून हो जाता है. सो आवर रिसेस बिगिंस कब होती है बेटा? एट नून. जब आप एक प्रॉपर ड्यूरेशन, जब भी हम लोग टाइमिंग के बारे में बात करते हैं तो जिस एक दिन के किसी एक पहर के बारे में जब आप बताते हैं, देन यू कैन यूज द एट वर्ड, राइट. और यू कैन okay, let's go for another example. I will take a walk. You can note down a walk or simple walk also. I will take walk dash dinner. मैं डिनर के बाद एक वॉक ज़रूर लेता हूँ. आई विल टेक वॉक कब? डिनर के बाद. हम लोगों ने ऑलरेडी जब उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया, आपके पास बाद वर्ड आया, इट मीन्स यू आर सपोज टू राइट डाउन हेयर आफ्टर. आई विल टेक अ वॉक आफ्टर डिनर, राइट. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो फॉर थर्ड. Okay, it's already vacations. You can't say it's vacations. The holidays are going on, but that is due to coronavirus, right? So what you can write down? You can write down, I will meet my teachers dash August. फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि अगर आपका लॉकडाउन खुलता है, खुलते खुलते बहुत देर हो जाती है, अगस्त, तो आप लोग क्या कहते हो कि मैं अपने टीचर से मिलूंगा अगस्त में. आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है बच्चे, मे के लिए हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में एक वर्ड यूज किया था, दैट इज इन. इन वर्ड का यूज आपके मे से दोनों में, प्लेस में भी यूज हुआ जब आप उसकी प्लेस बताते हो, मूवमेंट में भी यूज हुआ था जब आपने इनटू वर्ड में यूज किया था, और इन वर्ड कैन बी डिफाइंड, कैन बी यूज इन दी prepositions of time also. So for example, I will meet my teachers. When you will meet your teachers? In August. यहाँ आप उन्हें बता रहे हो आप कब मिलोगे, अगस्त में मिलोगे. तो यहाँ ये प्लेस ऑफ prepositions of place, मूवमेंट ना होके आपका क्या बन गया है, preposition of time बन गया है. वर्ड आपका सेम है बट इट इज डिफाइनिंग यू कि व्हेन यू विल मीट. आई इज योर नाउन और प्रोनाउन, लेकिन ये आपका नाउन और प्रोनाउन जो है कब कोई भी वर्कआउट कर पाएगा, अगस्त में. वो एक टाइम डिफाइन कर रहा है. दिस इज कॉल्ड योर टाइमिंग. सो होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू बच्चे. बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स विच इज रिलेटेड टू योर prepositions of time or anywhere in prepositions, preposition of time, place, movement, then you can kindly message me. I will send you the worksheets based on this whole chapter once again. You just have to solve it. Thank you so much, students. Take care.